हेलो दोस्तों, आज आम कथा हेबा किछि OSSC रो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जहां हमें प्रथम पार्ट रे किछि डिस्कशन करिथिले। आज हमें सेकंड पार्ट रे आउ किछि एमसीक्यूज देखिबा। तो प्रथम एमसीक्यू हला व्हिच पार्ट ऑफ पैनक्रियास प्रोड्यूस एंड सीक्रेट इंसुलिन। ऑप्शंस गुडी कहला ऑप्शन ए ग्लोमेरुलस, बी बाउमैन्स कैप्सूल, सी आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, डी लूप ऑफ हैंडल। जदि ऑप्शंस गुड़ाक आम केयरफुली देखा देन ग्लोमेरुलस, बाउमैन्स कैप्सूल एंड लूप ऑफ हैंडल ये तीनोटी नेफ्रॉन रो पार्ट जो जहाँकि किडनी भितर मिलिबो। सो नेफ्रॉन has different parts and the glomerulus, Bowman's capsule and loop of Fennel ये तीनोटी नेफ्रॉन रो पार्ट जे कि किडनी भितर अछि। तो डेफिनेटली ये तो पैनक्रियास रो पार्ट ही नुहे। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस गोटाए ऑप्शन जे कि बची माने अछि जहाँकि पैनक्रियास रो गोटाए पार्ट और यह सीक्रेट आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स रे सो केवल आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस गोटाए ऑप्शन जहाँकि आंसर हे पारे। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस केवल पैनक्रियास रो गोटाए पार्ट। चलंतु देखि नेबा आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस रे कौन कौन सब सेल अछि और ता भितर कौन सब हार्मोन रिलीज हुए। So if we make a cross section of pancreas then हमको मिलिबो ए टाइप रो किछि स्ट्रक्चर। तो आउटसाइड रे किछि फ्लावर शेप रो किछि सेल्स गुडा का अरेंजमेंट हेछि जहा को हमें पैनक्रियाटिक एसिनाए बोली कहिबा। एंड दिस इज द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास। जदि पैनक्रियाटिक एसिनाए को देखिबा सो दिस इज द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास, एक्सोक्राइन पार्ट। किंतु जदि एंडोक्राइन पार्ट हमें कहिबा देन पैनक्रियास रो सेंटर रे ए सेल्स गुडा को एंडोक्राइन पार्ट बोली कहि परिबा पैनक्रियास रो। ताले हमें पैनक्रियास को एग्जाम रे बेले बेले एमते भी क्वेश्चन पकाए कि व्हिच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट। तमे पैनक्रियास बोली आंसर करि परिबा काहे कि ना ए भितरे एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दुईटा जाकर सेल अछि। एक्सोक्राइन पार्ट रो पैनक्रियाटिक एसिनाई ये सीक्रेट कराए पैनक्रियाटिक जूसेस जे कि डाइजेशन पई हेल्प करिवो। पैनक्रियाटिक जूसेस राइट। एंड जदि हमें पैनक्रियाटिक आइलेट्स देखिबा जोटा कि सेंटर रे अछि ए भितरे डिफरेंट टाइप रो सेल्स थांती। कौन कौन सेल? फॉर एग्जांपल अल्फा सेल, बीटा सेल एंड देन डेल्टा सेल, देन पीपी सेल एंड देन द एप्सिलॉन सेल। तो अल्फा सेल भितरे कौन थिबो? अल्फा सेल रो काम होला सीक्रेट करेबा ग्लूकागोन एंड देन बीटा सेल रो काम होला सीक्रेट करिवो इंसुलिन। देन डेल्टा सेल रो काम होला सीक्रेट करिवो सोमाटोस्टैटिन एंड देन पीपी सेल रो काम होला रिलीज करिवो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एंड देन एप्सिलॉन सेल रो काम होला रिलीज करिवो गोटे हार्मोन जहार ना हला गेरलिन। से इंपोर्टेंट है गर्लिन हार्मोन को अदरवाइज आम कही परिबा हंगर हार्मोन बोली। तेणु समस्त मन रखिबा दरकार एग्जाम रे क्वेश्चन पकेबो व्हिच हार्मोन इज कॉल्ड एज द हंगर हार्मोन। द आंसर विल बी द गर्लिन। सो गर्लिन इज द हंगर हार्मोन राइट। नाउ जदि हम ग्लूकागॉन कथा कहिबा तो ग्लूकागॉन रो काम होला ब्लड रे ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेबा। ब्लड रे ग्लूकोज लेवल को ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करेबार काम होला ग्लूकागॉन रो। इंसुलिन रो काम होला ब्लड रो ग्लूकोज लेवल को कम करेबा। सो दिस विल रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज राइट। एंड सोमाटोस्टैटिन रो काम होला it will control both alpha and beta cell secretions like glucagon and insulin secretion को regulate करिबा। and then pancreatic polypeptide रो काम होला somatostatin raw secretion को control करिबा बा delta cell को control करिबा। so they are interlinked with each other। समाने समस्ते जेमति कि अल्फा बीटा डेल्टा और पीपी सेल समस्ते interlinked अछंती। सो एठी हमें करेक्ट आंसर जोटा हमें पढ़िले कि ग्लोमेरुलस तो बिल्कुल 100% नुहे ये एटा गोटे नेफ्रॉन रो पार्ट जोटा कि बाउमैन्स कैप्सूल भितरे थाए। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द बाउमैन्स कैप्सूल। 1 मिनट प्लीज। हां, लेट्स से दिस इज द बाउमैन्स कैप्सूल and inside the Bowman's capsule this is the I mean afferent arteriole जाइथिबो ग्लोमेरुलस भितर को and then these are the network of capillaries and then बाहर को बारिथिबो efferent arteriole।
सो नाउ ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को कहते ग्लोमेरुलस जोटा कि बाउमैन्स कैप्सूल भितर थाए एंड एटा नेफ्रॉन रो पार्ट नाउ एटा भी तो आंसर नुहे बाउमैन्स कैप्सूल भी तो नुहे लूप ऑफ फेनेल नुहे तो आइलेट्स ऑफ लांगरहांस रे कोन थाए बीटा सेल थाए जे कि हेल्प करे सिक्रेशन करबा को इंसुलिन रो सो इंसुलिन सिक्रेशन को आई मीन इंसुलिन सिक्रेशन बीटा सेल कराए जे कि आइलेट्स ऑफ लांगरहांस रे अछि how that is the part of pancreas. Now we'll talk about the next question. Next MCQ. In high grade fever, the body temperature is dash. High grade fever रे body temperature केते थाए? Option A 99 degree Fahrenheit to 100 degree Fahrenheit. Option B 100 degree Fahrenheit to 102 degree Fahrenheit. Option C 104 degree Fahrenheit to 106 degree Fahrenheit. And option D more than 106 degree Fahrenheit. ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବା ଦରକାର ଆଉ ଯଦି ଆନ୍ସର ନ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ବେସିକ୍ ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ିବା ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସୋ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ 104 degree Fahrenheit to 106 degree Fahrenheit. So now let's talk about some classifications and then what are the temperatures. Fever classification देखिबा and then कौन temperature रो range थाए से fever classification भितरे जदि normal कथा कहबा normally our body temperature will be range the range of our body temperature will be between 98.6 to 100.4 degree Fahrenheit. जदि mild और low grade fever कथा कहबा then our body temperature will be between 100.5 to 100.5 to 102 degree 102.2 degree Fahrenheit. Then moderate grade fever range hela 102.2 degree Fahrenheit to 104 degree Fahrenheit. High grade fever temperature range hela 104.1 degree to 106.0 degree Fahrenheit. Hyperparexia will be more than 106 degree Fahrenheit. तो हमको क्वेश्चन पचारि कि हाई ग्रेड फीवर रो टेम्परेचर रो रेंज केते तो आंसर एठी होबा दरकार कि 104.1 to 106 degree Fahrenheit. Otherwise you can remember by 104 to 106 degree Fahrenheit. That's a very simple way to remember. So now answer दबा पई ए क्वेश्चन रो हमको मन रखिया को पड़िबो ए थरो को क्वेश्चन में भी पचार देला हाई ग्रेड फीवर रो मे बी नेक्स्ट टाइम पचारि पारे मॉडरेट ग्रेड फीवर रो टेम्परेचर रेंज केते और मे बी हाइपरपारेक्सिया रो केते so we need to remember the classification of fever and then the respective temperature range. तो चलंतु नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करिबा नेक्स्ट एमसीक्यू हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज्ड ऑफ 7 बोन्स ए भितरु कहार 7टी बोन अछि ऑप्शन ए सर्वाइकल वर्टिब्रा ऑप्शन बी कार्पल्स सी cranial bones डी लंबर वर्टिब्रा जदि हमें केयरफुली देखिबा देन यार करेक्ट आंसर समस्त दबा दरकार हमें जानि छे कि लंबर वर्टिब्रा रो तो 5टी बोन थाए जिसको हम जहाँ को हमें L5 बोली कहूचे 5टी बोन थाए क्रानियल बोन्स केतेटा थाए क्रानियल बोन्स मैक्सिमम 8 बोन्स थाए कार्पल बोन्स 8टी थाए एंड देन सर्वाइकल वर्टिब्रा या भितरे 7टी बोन थाए हमें जानि छे C7 T12 L5 and then sacrum 5 and then coccygeal 4 so total hela केते 10 14 14 7 21 21 12 20 I mean 33 so total 33 टी बोन थाए तो हम बेले बेले काउंट हुए कि सैक्रल एंड कॉक्सिजियल को दुई बोली काउंट करा हुए कहीं कि ना ये फ्यूज है कि गोटे गोटे बोन हे जानते जते बेले फ्यूज हे जिवे सेते बेले द नंबर ऑफ बोन विल बी 7 plus 12 19 plus 5 24 and then plus 2 is equal to 26 so you can remember कि जदि फ्यूज न होइथिबे then 33 we can count as 33 और जदि फ्यूज वाला काउंट करिबा then the total number will be 26 चलंतु एबे देखिबा किछि क्लासिफिकेशंस बोन रो तो एठी करेक्ट आंसर हैला सर्वाइकल वर्टिब्रा जहार 7टी बोन अछि सो जदि हमें स्केलेटन टोटल स्केलेटन को हमें क्लासिफाई करिबा तो दुई टाइप रो क्लासिफिकेशन होबो गोटे फर्स्ट क्लासिफिकेशन को कहबा axial skeleton and number 2 second classification will be called as the appendicular skeleton तम भितर जेते की बॉडी भितर ह्यूमन बॉडी भितर जेते की बोन अछि सो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज वन द एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड इज कॉल्ड एपेंडिकुलर स्केलेटन द एक्सियल स्केलेटन सेटा जहा के सेंट्रल एक्सिस रो पाखरे थाए और एपेंडिकुलर स्केलेटन सेटा जोटा के सेंट्रल एक्सिस रो बाहर थाए
So we'll talk about कि central axis सांगरे के जोड़ी है कि थाए which are called as the axial skeleton जेमते कि skull bones, then hyoid bone, auditory ossicles, vertebral column, thorax. Now ଏବେ କଥା ହବା कि skull bone केतेटा अछि, hyoid bone, auditory ossicles, vertebral column, thorax ए सब केतोटी नंबर रो अछंती. Skull bone is the cranium and then face. Cranium रे 8टी बोन थाए, then face रे 14टा बोन, hyoid गोटाए जोटा कि 8 थाए, then auditory ossicles 6टी माने each ear रे तीनोटी malleus, incus and stapes. Vertebral column total 26 number रो एठी fuse वाला काउंट करा होछि, fuse sacrum 1 and then coccygeal 1. Thoracic sternum गोटाए, ribs 24 and total जदि देखिबा subtotal axial skeleton total ताले 80 number रो हेबो. Then appendicular skeleton जदि देखिबा या भितर आसीबो pectoral girdle, then upper limb, pelvic girdle, lower limb. So these are the parts of the appendicular skeleton. एमती कहि परिबा कि upper I mean pectoral girdle and then the upper limb, then pelvic girdle and then lower limb. That's it. चारोटी जिनस मन रखिबा को पड़िबो. ऊपर pectoral girdle and the upper limb, then lower limb and then pelvic girdle. Pectoral girdle, pelvic girdle, upper limb, lower limb. That's it. So pectoral girdle भितर कौन थिबो? Pectoral girdle जोटा कि क्लेविकल और स्कापुला को नहीं हेची. क्लेविकल दुईटा, गोटे राइट साइड रे गोटे लेफ्ट साइड रे, स्कापुला भी सेम लेफ्ट और राइट रे गोटे दुईटी. अपर लिम्ब रे कौन थाए? ह्यूमेरस, अल्ना और रेडियस दुई पट साइड रे राइट एंड लेफ्ट दुईटी. सो टोटल इक्वल टू 6. यदि कार्पल बोन्स कहबा, कार्पल बोन नंबर विल बी 8, वन साइड रे राइट रे 8 एंड देन लेफ्ट रे भी 8. मैं देखेबी 3D पिक्चर रे कि कार्पल बोन्स हमें कोटा कहबा. बेसिकली रिस्ट जॉइंट रे कार्पल बोन्स थाए. रिस्ट जॉइंट परे जो बोन्स गोटा का थाए टुवर्ड्स फिंगर इज कॉल्ड एज मेटाकार्पल, जोटा कि पांचटा राइट और लेफ्ट रे टोटल 10. फालेंजेस हला फिंगर्स भितरे जो बोन्स गुड़ाक अच्छी तार नंबर है गोटे हांड रे थिबा फिंगर रे 5टा फिंगर रे 14टा, नेक्स्ट 5टा फिंगर रे 14टा, टोटल 28. पेल्विक गार्डल रे हिप और पेल्विक बोन और कॉक्साल बोन जोटा दुईटा थाए. देन लोअर लिम्ब मतलब लेफ्ट और राइट रे एटा गोटे आ एपट साइड रे आ गोटे पेल्विक बोन थाए. लोअर लिम्ब रे फीमर, पाटेला, फिबुला और टिबिया चारोटी, जहाँकि दुईटी 8टी थाए. जमते कि फीमर दुईटा, पाटेला दुईटा, फिबुला दुईटा और टिबिया दुईटा, टोटल 8टी नंबर रो थाए लोअर लिम्ब रे. टार्सल सेमती जोटा कि एंकल जॉइंट रे थिबो. टार्सल एठी मन रखिबार कथा कि कार्पल टोटल 16 बट टार्सल 14टा, जोटा कि रिस्ट जॉइंट रे 8टी लेखाएं 16टी बोन, किंतु टार्सल माने एंकल जॉइंट रे 7टी लेखाएं 14टी बोन. ए डिफरेंस टी हमें मन रखिया को पड़िबो. मेटाकार्पल जोटा कि हाथ रे थाए रिस्ट जॉइंट और फिंगर्स भितरे 10टा, एठी भी सेम मेटाटार्सल 10टी थिबो. फालेंजेस जोटा कि फिंगर भितरे थाए, हाथ रे थिबा फिंगर्स रे 14 14 28 टी. सिमिलरली गोड़ रे थिबा फिंगर्स रे 14 14 28 टी बोन थाए. सो सब टोटल हैला अपेंडिकुलर स्केलेटन रो 126. पढ़ी एक्सियल स्केलेटन रे 80टा और अपेंडिकुलर स्केलेटन रे 126. टोटल नंबर रो बोन हैला हमर 206. नाउ एबे देखिबा कि क्रानियल बोन्स जोटा एबे कथा हेले कि 8टी बोन थाए. से कौन 8टी बोन थाए क्रानियल बोन्स भितरे? Number 1 is the frontal bone, next parietal bone, then sphenoid bone, ethmoid bone and temporal bone, and then occipital bone. ठीक अछि. तो आपको मन रखिबा पई जो ट्रिक हैला निमोनिक आमे कहि परिबा जो ट्रिक 8 osseous parts from the skull. 8 osseous part from the skull. ए सेंटेंस को कंप्लीटली मन रखिया को पड़िबो. 8 osseous part from the skull. 8 रो फर्स्ट लेटर E, then osseous ro first letter O, and then parts ro first letter P, and then from the first letter F, and then next the first letter T and skull ro first letter S. So हम एमती मन रखि परिबा. E stands for ethmoid bone, right? And then O stands for occipital bone. O stands for occipital. P stands for parietal, and then F stands for frontal. Then T stands for temporal bone.
and then S stands for sphenoid bone. So आमे कहि परिबा total 3 4 5 and 6 टी बोन थाए टोटल नंबर 6 टी बोन थाए किंतु या भितरे पेयर्ड आउ अनपेयर्ड थांती पेयर्ड दुईटा बोन कौन कौन पेयर्ड जेमती कि आमे कहि परिबा टेम्पोरल बोन गोटे पेयर्ड थाए आ गोटे पैराइटल बोन पेयर्ड थाए तो पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन एगुड़ाक पेयर्ड थांती तेणु दुई दुई आई मीन 1 1 2 एटी भी दीटा थिबो आउ टेम्पोरल बोन एटी भी दीटा थिबो आ बाकी सब गोटाए गोटाए सो 1 2 3 4 बाकी सब चारिटा आउ बाकी आउ जो दुईटा रहिला पेराइटल आउ टेम्पोरल या ए दुईटा भी मिसे के चारिटा सो टोटल बोन नंबर हैला क्रैनियल बोन्स इज इक्वल टू 08 बा 8टी क्रैनियल बोन्स थाए तो मन रखिया पई ट्रिक हैला 8 ऑसियस पार्ट्स फ्रॉम द स्कल नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द विराट cannot make my pet zebra laugh एटा गोटे निमोनिक मन रखिया पई कि फेशियल 14टा बोन कौन कौन ताको मन रखिया पई एटा हला ट्रिक बा निमोनिक विराट कैन नॉट मेक माय पेट जेब्रा लाफ विराट कैनॉट मेक माय पेट जेब्रा लाफ तो वी माने कौन वोमर वी स्टैंड्स फॉर वोमर सी माने कौन सी मीन्स कोंकाई कोंकाई गुड एक मिनट C stands for conkai. C stands for conkai. Then N. N stands for nasal bone. Nasal bone. And then M stands for mandible. Mandible. And next M stands for maxilla. And then P stands for the palatine. And then Z stands for zygomatic. And then L stands for lacrimal. So this is how we can remember the names of the 14 facial bones. तो ये 14 भितरु पेयर्ड कोटा और अनपेयर्ड कोटा गोटे आमे जानिछे भलो भाबरे मैंडिबल गोटाए थाए एंड ता संगरे वोमर भी गोटाए थाए और बाकी सब गुडाक दुई दुईटी कोंकाई दुई नाजल बोन दुई मैक्सिला दुई पालाटाइन दुई जाइगोमेटिक दुई लैक्रिमल बोन दुई और बाकी वोमर 1 एंड मैंडिबल 1 so 1 3 5 6 then 8 10 12 and 14 so total 14 facial bones so mnemonic but trick मन रखिबार हैला विराट cannot make my pet zebra laugh चलंतु एबे देखिबा कि स्पाइनल कॉर्ड रे कौन कौन सब बोन अछि तो स्पाइनल कॉर्ड रे टोटल 33 वर्टिब्रल कॉलम अछि जोटा कि 24 मोबाइल बोन्स एंड 9 फ्यूज बोन्स 24 मोबाइल भितर कौन कौन अछि जेमति कि 7टी सर्वाइकल बोन C7 एंड देन T12 माने थोरासिक 12टी एंड लंबर 5 माने L5 देन सैक्रल S5 एंड कॉक्सियल 4 सो टोटल 33 वर्टिब्रा किंतु फ्यूज्ड होला परे टोटल हमें 26 बोली काउंट करूछे सो मन रखिया पई कोन अछि C7 T12 L5 देन S5 C4 but एगुडा को फ्यूज होला परे 1 1 काउंट करा हुई right so this is how we can remember the vertebral columns now this is about the carpal bones गुडा को कोन और तार ना गुडा को कोन अछि we'll talk about the mnemonic first mnemonic कोन अछि जहा को मन रखिबा दरकार she looks too pretty try to catch her she looks too pretty try to catch her एटा हला mnemonic जोटा कि मन रखिबा दरकार कार्पल बोन्स को मन रखिया पई कार्पल बोन्स जो 8टी कार्पल बोन अछि तो कौन कौन फर्स्ट देखि नंबर गोटे हला हामेट देन ट्रापेजॉइड देन ट्रापेजियम कैपिटेट देन पिसिफॉर्म ट्राइक्यूट्रियम ल्यूनेट एंड देन स्काफोइड सो स्टार्ट करिबा हमें फर्स्ट फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एंड फ्रॉम लैटरल टू मीडियल माने कोन एटा लैटरल साइड रो मीडियल साइड एड को जिबा लैटरल टू मीडियल एंड देन फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल प्रॉक्सिमल कोन जोटा कि बॉडी आड़ को थाए ए बोन गुडाक बॉडी आड़ को थिबो आ एटा फिंगर्स आड़ को थिबो एपट साइड राइट जो गुडाक हमें देखि पारुछे प्रॉक्सिमल साइड रे सो एगुडाक मीडियल रो आई मीन लैटरल टू मीडियल ए वाला एपट साइड हैला लैटरल साइड एटा हैला मीडियल साइड तो स्टार्ट करिबा कोन कोन थाए
from from lateral to medial and then from proximal to distal side. First start kariba, the C looks too pretty. C looks too pretty. It first letter hela C ro S, and then L ro, looks ro L, then true ro T, and then pretty ro P. So first bone scaphoid, and then lunate, then triquetrium, then pisiform. From lateral to medial, and then these are the proximal rows. Proximal row माने body आड़को थिबा row चारोटी bones गुड़ाक from lateral to medial. First है कौन scaphoid, then L माने कौन lunate, and T माने triquetrum, and then P means pisiform. So it है first row रो from lateral to medial. Similarly जदि आमे कहबा next row माने distal row रो from lateral to medial, ताले कौन कौन होबो? First आमे देखिबा next mnemonic हला try to catch her. First try रो first letter हला T, then two रो first letter हला T, then catch रो C, and then H रो her रो H. So first from medial to lateral. First one is the trapezium, next is the trapezoid, and then next is capitate, and the last one is the hamate. So these are the four different bones of the distal row of the carpal bones. The first one is the trapezium, next trapezoid, and then C capitate, and then H hamate. So एगुड़ाक है चारोटी बोन जोटा कि डिस्टल साइड रे कार्पल बोन्स गुड़ाकर थाए डिस्टल पार्ट रे. सो वी गॉट 8 बोन्स इन द रिस्ट जॉइंट. ए सब गुड़ाक कोड थिबो रिस्ट जॉइंट रे थिबो, राइट. रिस्ट जॉइंट आगो को आमे जदि जिबा, सो ये जो पांचोटी बोन देखा जाउची एगुड़ाक आमे कहिबा मेटाकार्पल बोन्स. मेटाकार्पल बोन्स, राइट. दिस आर कॉल्ड मेटाकार्पल बोन्स. सिमिलरली जब आम टार्सल बोन को मन रखा जावा, सो टार्सल बोन रो भी निमोनिक अच्छी. निमोनिक है क्यूटिना नेवर कुड कोऑपरेट. क्यूटिना नेवर कुड कोऑपरेट अगेन फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल रो एंड फ्रॉम लैटरल टू मीडियल. सेम वे रे कथा हेबा कि फ्रॉम लैटरल टू मीडियल और प्रॉक्सिमल टू डिस्टल रो. प्रॉक्सिमल माने एबे पढ़िले, प्रॉक्सिमल माने जोटा बॉडी आडो को थिबो, डिस्टल माने जोटा बॉडी रो दूर को थिबो. एंड देन फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड कौन कौन बोन अच्छी. फर्स्ट बोन विल टॉक अबाउट द क्यूटिना नेवर कुड कोऑपरेट. फर्स्ट वन द क्यूट C, then T, then N, then C and C. चलते भी देखिबा फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल रो एंड फ्रॉम लैटरल टू मीडियल कौन कौन सब बोन अच्छी टार्सल बोन्स. इजी टू रिमेंबर. क्यूटिना नेवर कुड कोऑपरेट. फर्स्ट C, letter C from cute, and then from Tina T letter, and never from never it is N, and then could C. So first देखिबा first from lateral to medial side. First lateral the yellow one called calcaneus. Then the green one called talus. Next is the red one called navicular, and then the blue one is called as the cuboid. तो चारोटी बोन आम मन रखिले क्यूटिना नेवर कुड कोऑपरेट फर्स्ट, एंड देन नेक्स्ट लेटर हैला C द कोऑपरेट रो. सो C माने कोन? C स्टैंड्स फॉर क्यूनिफॉर्म. C stands for cuneiform, and cuneiform is again of 3 different categories. Cuneiform तीनटा प्रकार रो कोन कोन? नंबर 1 is called the medial one. एटा जोटा कि medial side रो अछि. एटा हला the intermediate cuneiform, and this one is called as the lateral cuneiform. किंतु आमे lateral रो medial को मन रखिछे, so we can remember this way कि cuneiform from lateral to medial. First lateral cuneiform, and number 2 is the medial cuneiform, intermedial cuneiform, intermediate cuneiform,
This will be intermediate cuneiform. And then next one is the medial cuneiform. So we got 7 different bones in the tarsal bones. So number 1, calcaneus, T, talus, N, navicular, C, cuboid, and then C is the cuneiform, jaki tinita type ro lateral, intermediate and medial type. So these are the tarsal bones. Exam रे type रो question पचारिबो कि total tarsal bone केतेटी. तो आंसर केतेटा हबा दरकार. Total tarsal bone one side रे 7 plus next side रे 7 and the total number will be 14 in number. Right? So mane rakhibar technique hela Q, tina never could cooperate. Q ro first letter C, calcaneus, tina ro first letter T, talus, N ro first letter N, I mean never ro first letter N is navicular, and kud ro first letter C is the cuboid, and then cooperate ro first letter C is the cuneiform, jake tini type ro medial cuneiform, I mean lateral cuneiform, then intermediate cuneiform, and then the medial cuneiform. So these are the parts of, I mean different names of the tarsal bones. Upper limb bro, first this is the humerus, and then this is the radius and ulna. So radius और ulna detect करिबार technique हिला मु कहि दे. Radius और ulna रो detect करिबार technique हिला, this is the little finger side and this is the thumb finger side. एटा हला thumb finger side and this is the little finger side. Pinky ulna मतलब pinky finger को pinky finger side रे ulnar bone थाए, माने little finger side रे ulnar bone थिबो and thumb finger side रे थिबो, this one is the radial bone, right? Ulnar bone and radial bone. Similarly आमे जदि मन रखिबा को पड़िबो कि tarsal bone केतेटा, I mean carpal bone केतेटा अछि, then from lateral to distal आमे कहि परिबा गोटे. Number 1, this is the scaphoid, and this is the lunate, and this is the triquetrium, and then this is the hamate, and then capitate, and this is the trapezoid, and then trapezium, and then bhitara patre achi eta is the this is the pisiform. So these are 8 carpal bones of the hand. That right? बुझा पड़ला समस्त को आउ थरे जूम करके देखै दोछि. Right. Now this is the scaphoid, then lunate, and then triquetrium, and then opposite side रे जदि आमे देखिबा, opposite side रे हमको pisiform मिलेबो. This is the pisiform. Now जदि आमे distal row रे देखिबा, the distal row रे चारोटी बोन अछि. Number 1, hamate, and this is the capitate, and this is the trapezoid, and this is the trapezium. Trapezoid, then capitate and hamate. So these are from lateral to medial. Okay, now these are the bones called as metacarpals. एगुड़ा को metacarpal bone कहिबा. First metacarpal, second metacarpal, third metacarpal, fourth metacarpal, and fifth metacarpal. Similarly, जदि हम आउट के आगो को जिबा, these are the bones in finger. Total number of metacarpal हिला 5. Exam रे question पचरिबो, how many number of metacarpal bones are there? So one left hand रे 5, right hand रे 5टा. So total 10 numbers रो metacarpal bones अछि. Similarly, जदि हमें fingers रे question पचरिबो कि how many phalanges are there? So your answer should be what? 28 phalanges. 14 plus 14. So 14 केमती हैला जेमती कि this one. तो right hand रो हमें जदि देखिबा, number 1, number 2 and number 3 सबु गुडाक रे तीनोटी लेखाएं, सबु फिंगर रे तीनोटी लेखाएं बोन थिबो. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and then similarly 80 किंतु दुईटा बोन थिबो, right? This is 1 and this is 2. Total चारिटा फिंगर रे तीनोटी लेखाएं, 4 3 की 12, and then next finger रे अछि केवल next finger रे अछि केवल दुईटी. So total हैला 14 टी बोन. So total 14 टी phalanges अछि. Next जदि हमें lower limb रो देखिबा, lower limb रो जदि देखिबा, 1 minute. जदि lower limb रो देखिबा, then this is the one part of the pelvis रो गोटाए part, and pelvis रो गोटाए part रे केवल गोटाए one innominate bone, and similarly जब एटा right side रो left side रो भी similarly थिबो. This bone is called as the femur bone.
This is the femur bone and this is the patella. Femur gotae अछि, one side re 1 and then patella gote side re 1. So total patella number will be 1. This is called, I mean, 1 gote leg re au gote log re 1. So total hela 2 right? Now other bone, this one, this is called as the fibula and this is the tibia. Tibia टिके बड़ और fibula टिके पतला size रो. Now next देखिबा leg रे कौन कौन माने feet रे कौन कौन bones सब अछि. So these are the tarsal bones. These are called tarsal bones and these are the metatarsals and these are the phalanges. So first bone, this is the from the lateral to medial. This one is the cuboid and then first one is the calcaneus. Q-tina, first hello calcaneus, tina ro first letter T means talus and next tina never could cooperate. Never ro first letter N is the navicular and then cooperate ro never could ro first letter C mane cuboid. First calcaneus, then talus, then navicular and then cuboid. Similarly, out tinoti jota achi from lateral to medial is the cuneiform. This one is the lateral cuneiform. This is the intermediate cuneiform and this is the medial cuneiform. Similarly, jodi phalanges dekhiba, one, not phalanges, metatarsals. First metatarsal, second metatarsal, third, fourth and fifth metatarsal. Similarly, jodi bones ame dekhiba, so bones in finger re jodi bone dekhiba ame big toe re duiti thiba bone, these are called the phalanges या phalanx जहाँ भी हमें कोई परिवा. So proximal phalanx, distal phalanx, then proximal phalanx, intermediate, middle या intermediate, whatever you say, middle phalanx and then the distal phalanx. सबुथिरे तीनोटी लेखा है, the proximal, middle and the distal phalanx. Proximal, middle and distal phalanx except the big toe रे दुईटा थाए. So चारोटी फिंगर रे तीनोटी लेखा है, 4 के 12 प्लस ये दुईटा, टोटल 14 टी बोन थिबो feet रे, the phalanx thibo feet रे. This is about the lower leg. And then let's talk about the ribs. Ribs bisore टिके कथा हे जिबा. So ribs total 24 number ra thai. This is the sternum we have and this is the clavicle and on the back side we have the scapula. Duita scapula thibo and similarly we have 2 clavicles, right? And we have one sternum here. जदि ribs हमें count करिबा, so total number of ribs जदि हमें देखिबा, so ribs will be 1 2 3 4 माने one side रे 5 then 6 then 7 8 9 10 and back side रे आउ दुईटी अछि 11 आउ 12, right? Now जदि हमें sternum संगरे attach हेतिबा ribs गुडा को देखिबा तहले डायरेक्टली अटैच हेतिबा ribs गुडा कहला 1 2 3 4 5 6 and 7 जोटा कि डायरेक्टली अटैच हेछंती. देखंतु एठी फर्स्ट these are directly connected with the sternum 2 3 4 5 6 and the 7th rib and up to 7 सब गुडा को ट्रू ribs बोली कहबा काहे कि ना से माने डायरेक्टली कनेक्ट हेछंती. किंतु जदि हमें देखिबा नंबर 8 9 और 10, these are called false ribs. Not only 10 but the 11 and 12 as well. एट देखिबा 12 11 और 12 एगुडा को भी डायरेक्टली अटैच हे नाहंती. So these are called false ribs. एटा हला नंबर 7th rib. 7th rib तळको जो तीनोटी rib अछि 8 9 और 10 एग्जाम रे क्वेश्चन पचरिबो. So how many false ribs are there? So answer should be 1. एटा गोटे false rib काहे कि ना ये डायरेक्टली अटैच हेनी, ये अटैच हेछि कहा संगरे 7th संगरे. The 8th number rib 7th संगरे अटैच हेछि, this is the false rib. Then 9 8 संगरे अटैच हेछि, 10 9 संगरे अटैच हेछि. So 8 9 and 10 these are called false ribs because they are not attached to the sternum directly. Sternum संगरे से माने डायरेक्टली अटैच हे नाहंती. नेक्स्ट आउ गोटे एग्जाम रे क्वेश्चन पचरे how many number of floating ribs are there? Floating ribs माने जो गुडा को झुलंता rib, ए दुटा हला झुलंता rib. ए माने डायरेक्टली कोनोसी भी
रिब संगरे अटैच हे नाहंती आई मीन रिब संगरे तो फर्स्ट अटैच हेनी कि स्टर्नम संगरे भी अटैच हेनी सो एठी क्वेश्चन पचारिबो हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रू रिब्स आर देयर सो ट्रू रिब्स रो नंबर केते आसीबो ट्रू रिब्स रो नंबर हला जो गुडा का स्टर्नम संगरे डायरेक्टली अटैच हे छंती 1 2 3 4 5 6 and 7 up to 7 there are uh, they are called as the true ribs if, one side रे माने right side रे 7 left side रे भी 7 similarly जदि पचारिबो find out the false rib या भितर कोटा false rib बोली find out करिवार अछि then you should remember number 8 9 10 and 11 out 12 ए सब गुडा को false rib बोली कहिबा next जदि क्वेश्चन पचारिबो how many floating ribs are there answer will be 2 11 out 12 right the answer kahi ki because they are not attached to any kind of rib konosi rib sangre se mane attach he nahanti so why these are called as false ribs answer will be they are not directly connected to the sternum se mane sternum sangre direct attach he nahanti but they are attached to the other ribs with the cartilage re se mane attach he chanti these are the cartilage so cartilage re se mane attach he chanti 1 2 3 so these three ribs are attached to the seventh one with the cartilage that's why these are called as the false ribs I guess समस्तन को एटा क्लियर है गला now the next question is there are dash pairs of ribs present in human body re total kette pair of ribs achi the answer should be what answer should be 12 pairs why because 12 pair mane total number of 24 right so answer will be 12 pairs एबे हमें कथा हेले कि टोटल ribs रा नंबर हैला 24 one side रे 12 and other side रे 12 so total true ribs हैला up to 1 to 7 1 2 3 4 5 6 and 7 total हैला true ribs हैला 7टी false rib हैला 8 9 10 11 और 12 और ता भितरु 11 और 12 these two are called as floating ribs or vertebral ribs right next when was India declared polio free next question पचारिसी polio उपरे when was India declared polio free the answer will be option A 2011 B 2012 C 2013 D 2014 the correct answer will be 2014 so आमे वर्तमान पई जो एमसीक्यू गुडा का डिस्कशन करूचे ए एमसीक्यू जदियो सब्जेक्ट बेस्ड नुहे माने सब्जेक्ट वाइज आमे डिस्कशन करूने but these are the hot MCQs which may come in your examination ये सब गुडा का बहुत important MCQs so आमे सब्जेक्ट वाइज भी MCQ डिस्कशन करिबा मो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी नै के आसेबी जो थिरा आमे सब्जेक्ट वाइज MCQ डिस्कशन करिबा so answer kahin ki 2014 is the correct answer we'll see first 1978 रे expanded program on immunization was launched 1978 रे first जो immunization program start हेतिला बा launch हेतिला that is called as expanded program on immunization then 1985 रे renamed as universal immunization program कौन बुझा पड़ला कि EPI first EPI extended program of immunization was started in 1978 then it rename hela आउ थरे यार नामकरण करा गला 1985 रे आउ ना हला कोन universal immunization program UIP then 1995 रे India launched the pulse polio immunization program 1995 10 वर्ष परे जेबे universal immunization program हला तार 10 वर्ष परे इंडिया लॉन्च कला पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम राइट सो फर्स्ट 1978 मन रखिबा 1978 एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ईपीआई देन 1985 स्टार्ट हैला यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड देन 10 वर्ष परे 1995 स्टार्ट हैला कोन ना पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देन पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड देन 2011 January 13 रे लास्ट पोलियो केस रिपोर्ट हेतिला फ्रॉम वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हावड़ा रिपोर्टेड इन हावड़ा इन वेस्ट बंगाल मन रखिबा एग्जाम रे क्वेश्चन पचारि परिबो कि लास्ट पोलियो केस केबे डिटेक्ट हेतिला
और को स्टेट रे डिटेक्ट हेतिला त आंसर रहइबो कि 2011 रे फर्स्ट पोलियो आई मीन लास्ट पोलियो केस डिटेक्ट हेतिला 2011 जनवरी 13 रे और को स्टेट रे आंसर रहइबो वेस्ट बंगाल राइट तापरे कोनोसी पोलियो केस डिटेक्ट हेई नाहंती 2011 रु 2014 अप टू 3 इयर्स 3 वर्ष पर्यंत इंडिया रे कोनोसी भी पोलियो केस नथिले टोटल 0 केस थिला सो दैट्स व्हाई WHO डिक्लेयर कला और इंडिया को गोटे सर्टिफिकेट देला पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन राइट सो दैट इज ऑन 2014 27th मार्च 2014 रे WHO सर्टिफाई कला कि इंडिया इज कंप्लीटली पोलियो फ्री कहीं कि ना 2011 रे जब वेस्ट बंगाल रे लास्ट केस डिटेक्ट करा हिथिला तारो 3 वर्ष पर्यंत कोनोसी नुवा केस पोलियो रो बाहरी नथिले सो दैट्स व्हाई द WHO डिक्लेयर्ड इंडिया एज द पोलियो फ्री कंट्री सो जदि आमे ऑप्शंस को देखिबा ताले व्हेन वाज द इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री आंसर रहइबो 2014 WHO डिक्लेयर्ड or certified that India is completely polio free and that was on 27th March 2014 so after 2014 25th December Xmas day Xmas dino ame koche December 25th is the Xmas so December 25th 2014 re mission Indradhanush was launched with an aim to provide full immunization coverage to children up to 90% छुआ माननकु इम्यूनाइजेशन करिया पई इंडियन गवर्नमेंट गोटे मिशन माने गोटे प्रोग्राम लॉन्च कला ना हला मिशन इंद्रधनुष एग्जाम रे क्वेश्चन पचरिबो व्हेन मिशन इंद्रधनुष वाज लॉन्च्ड इन इंडिया द आंसर रहइबो 25th December 2014 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा फर्स्ट डे ऑफ अ लेडीज मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज जुलाई 12 2019 व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी या EDD कैलकुलेट करिया पे क्वेश्चन पचरे छी सो एथि पे हमें जो रूल फॉलो करछे एग्जाम रे डायरेक्टली क्वेश्चन पचरे व्हिच रूल इज फॉलोड टू कैलकुलेट EDD ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन गोटे प्रेग्नेंट वुमन रो EDD कैलकुलेशन करिया पे कौन रूल फॉलो करा जाए तो आंसर रहइबो नेगेल्स रूल तो नेगेल्स रूल हिसाब रे हमें EDD कैलकुलेट करिबा सो रूल हिसाब रे कोन अछि रूल इज कि LMP नेगेल्स रूल हिसाब रे EDD इक्वल टू LMP प्लस 9 month 7 days राइट 9 months प्लस 7 days सो कैलकुलेट करिबार इजी ट्रिक कोन अछि फर्स्ट जुलाई 12 2019 तमे कहि परिबा 12th जुलाई माने 07 2019 राइट सो हमें इथिरे कोन करिबा कि फर्स्ट हमें एमती कहि परिबा कि 9 months फर्स्ट ऐड करिबा देन 7 days ऐड करिबा सेमती भी परिबो प्लस किंतु सबटो इजीएस्ट ट्रिक हला कोन कि फर्स्ट 1 year ऐड करो फर्स्ट 1 year ऐड करो माइनस करो 3 months राइट 1 year 9 months equal to 1 year minus 3 months yes or no so it's very simple मैं डायरेक्टली सेम डेट भी लिखि परिबा 12/07/2020 सो इटा 1 year हे गेला देन 3 months माइनस कर दियो 7 को कर दियो 4 राइट एंड देन 7 days खाली ऐड करिबा होई गेला केते 19/04/2020 सो दिस इज द करेक्ट आंसर तो 04 माने कोन 1904 माने April 19th 2020 is the correct answer option D is the correct answer so EDD calculate करिबार इजी ट्रिक फर्स्ट 1 year ऐड करो देन माइनस करो 3 months देन प्लस करो 7 days दैट्स इट किछि भी डेट देथिबो 1 year ऐड करो 3 months माइनस देन प्लस 7 days otherwise if you feel comfortable with other methods you can use next question hela a child with SAN severe acute malnutrition you should remember that so acute malnutrition को दो टाइप रा as per WHO acute malnutrition is classified into two different categories one is called as severe acute malnutrition and another is called as moderate acute malnutrition so child with is severe acute malnutrition if जदि गोटे छुआ को severe acute malnutrition बोली कहिबा केते बेले ना जेते बेले जदि MUSC केते रहिबो
जदि एमईओसी केते रुहे ताहले आमे छुआ को सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन बोली कहबा। एमईओसी माने कोन? मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस केते रहिले गोटे छुआ को आमे सैम बोली डिक्लेयर करिबा। सो ऑप्शन ए less than 12.5, B less than 11.5, C less than 13.5 centimeter, D between 12.5 to 13.5 centimeter. So the correct answer is B less than 11.5 centimeter. चलंतु या भितर किछि डिस्कशन करि नेबा। फर्स्ट कोन acute malnutrition और chronic malnutrition फर्स्ट डिस्टिंग्विश करिबा, and then acute malnutrition again will classify as SAM and MAM. As per WHO parameters, जदि आमे कौन सी छुआ आसे आम पाखक ताहले आमे केमिति जानिबा कि छुआटी acute malnutrition रे अछि किंबा chronic malnutrition रे अछि। तो तापई parameters हैला, first parameter is the weight for age, next parameter is the height for age, next parameter is weight for the height. So एई तीनोटी parameter को नेकी आमे acute और chronic malnutrition classify करि परिबा। फर्स्ट हैला फॉर एग्जांपल कौन सी छुआ acute और chronic malnutrition कथा कहबा। कौन सी को छुआ जहा को मात्र 4 और 5 days हेबो डायरिया हेछि, एंड आउ गोटे छुआ जे कि कंप्लीटली 2 इयर्स हेलानी जहा को मालन्यूट्रिशन अछि, माने ठीक से खाइबा न्यूट्रिएंट सप्लाई ठीक से हेउनी, मालन्यूट्रिशन अछि। ये दुईटा को आमे कहि परिबा गोटे हला एटा हला acute case and this is the chronic case. For example जदि हम acute malnutrition कथा कहिबा, chronic malnutrition कहिबा, पैरामीटर रहिबो weight for age, ताहले acute malnutrition रे जहा को 4 to 5 days of डायरिया हेछि से केस रे weight डिक्रीज हबो कि हबोनी। chronic malnutrition रे जहा को 2 वर्ष हबो malnutrition अछि तार weight कम हबो कि हबोनी। तो आमे जदि कंपेयर करिबा ताले acute और chronic malnutrition दुईटा केस रे जहा को 4-5 days हबो डायरिया हेछि किबा malnutrition जहा को 2 वर्ष रे हलानी, तो दुईटा जाक केस रे कोन हबो कि वेट फॉर एज हिसाब रे वेट कम रहिबो। सिमिलरली जदि हाइट कथा कहिबा ताले जहा को 4-5 दिन हबो डायरिया हेछि जे कि acute केस, acute malnutrition वाला केस, सेतरे डेफिनेटली हाइट तो कमिबोनी, दिस विल रिमेन नॉर्मल। 4-5 दिन रे हाइट तो बिल्कुल कमिबोनी, किंतु जहा को 2 वर्ष हेलानी malnutrition अछि डेफिनेटली तार हाइट तो कम रहिबो, सो दैट विल डिक्रीज। जदि हम वेट संगे हाइट को कंपेयर करिबा देन acute malnutrition रे हाइट हिसाब रे वेट कौन रहिबो, डेफिनेटली कम होइबो, किंतु chronic malnutrition रे कौन हबो जेहेतु वेट भी कमी जाउछि, हाइट भी कमी जाउछि, तेनु द रेशियो विल रिमेन नॉर्मल बिकॉज वेट भी कमुछि और हाइट भी कमुछि, दुईटा जाक कमुछि, बैलेंस रहिबो, सो दिस इज नॉर्मल इन दिस केस। सो द पैरामीटर हैला acute और chronic malnutrition को क्लासिफाई करिवारो। So these are the three different parameters. Number 1 weight for age, number 2 height for age, number 3 is weight for height. So जेमति कि हम डिस्कशन कले जदि कोनोसी छुआ को अल्प दिन धरि डायरिया हेछि that will be consider as the acute malnutrition वाला छुआ, आउ जहा को 2 वर्ष हलानी malnutrition अछि so definitely chronic malnutrition. So acute वाला केस रे weight कम रहिबो and chronic केस रे भी weight कम रहिबो as per age. हाइट फॉर एज जदि हम डिस्कशन करिबा ताले acute केस रे जहा को डायरिया हेछि दिन 2 दिन रे तो वेट आई मीन हाइट तो डेफिनेटली कम रहिबनी, सो दिस विल बी रिमेन एज नॉर्मल, किंतु chronic malnutrition वाला छुआ को डेफिनेटली कोन हबो कि हाइट टिके कमी जिवो। सिमिलरली जदि वेट फॉर हाइट कथा कहिबा acute malnutrition रे कम रहिबो, किंतु chronic malnutrition रे बोथ जेहेतु वेट और हाइट दुईटा जक कमुछि, सो दिस विल रिमेन एज बैलेंस, सो नॉर्मल रहिबो। Now once will classify जदि हमें कौन सी छुआ को क्लासिफाई करले कि एटा acute वाला छुआ, acute malnutrition वाला छुआ कि chronic malnutrition वाला छुआ, so these are the parameters we have. जदि weight for age low, height for age is normal and weight for height is low, then we can say it is a malnutrition, acute malnutrition वाला छुआ जहारो low रहिबो height and weight for age and then weight for height will be normal, so this is the chronic malnutrition वाला छुआ. So acute malnutrition once we'll classify, then we'll further go for classification as severe acute malnutrition and moderate acute malnutrition. Let's talk about what other parameters we have to classify severe acute malnutrition and moderate acute malnutrition. कौन parameters अच्छी? Number 1 weight for height,
Then number 2 is the mid upper arm circumference, जो क्वेश्चन पचारि थिला कि mid upper arm circumference केते रहिले आमे कहिबा गोटे साम बोली छुआ को साम बोली कहिबा या severe acute malnutrition वाला छुआ कहिबा. नेक्स्ट थर्ड इज बायलैटरल इडिमा. क्वेश्चन एठू पचारिबो कि साम रो कोन कोन पैरामीटर्स अछि, जेमति कि एबे साम माने सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन रे कोन कोन पैरामीटर, जेमति कि एबे कहिले लेस देन 11.5 सेंटीमीटर जदि मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस रहिबो किंबा वेट फॉर हाइट जदि लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन रहिबो एंड जदि बायलैटरल इडिमा थिबो. जदि पेडल बेसिकली फीट रे होय इडिमा, so if the pedal bilateral edema pedal edema अछि, mid upper arm circumference जदि less than 11.5 centimeter and weight for height is less than 3 standard deviation, then definitely the baby is severe acute malnutrition wala. Then moderate acute malnutrition wala chua jodi kahiba, then the weight for height will be between -3 to -2 standard deviation and mid upper arm circumference will be 11.5 to 12.5 centimeter and bilateral edema will be absent. Now ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟାଏ क्वेश्चन थिबो कि what is standard deviation. WHO गोटे एमती ग्राफ देथिबो, सो ग्राफ रे सब एमती लेखा थिबो कि एटा 0 0 and then -2 standard deviation, -3 standard deviation, and this is let's say is the +1, this will be -1 and this will be +2 and then this will be +3 like that. And one side रे थिबो for example is the weight and another side रे height. तो height और weight को जदि आमे क्रॉस करिबा जे कोठी एक्जेक्टली आसुची, जदि height और weight को क्रॉस करले आसुची less than -3 standard deviation, for example 8 पळा आसला, so it is definitely less than 3 standard deviation, so is called as the severe acute malnutrition वाला category रे आसीबो. So now we can classify as per WHO, आमे classify करि परिबा कि के severe acute malnutrition वाला छुआ और के moderate acute malnutrition वाला छुआ. So क्वेश्चन पचारि थिला कि MUSC केते रहिले आमे WHO हिसाब रे MUSC केते रहिले आमे कहिबा severe acute malnutrition, त आंसर हेलो 11.5 सेंटीमीटर. जदि between 11.5 to 12.5 centimeter रहिबो MUSC, then we'll say it is a moderate acute malnutrition वाला छुआ. Basically normal थाए as per Indian Academy of Pediatrics, as per IAP, our माने MUSC गोटे छुआर रहिबा दरकार मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस मिनिमम रहिबा दरकार 12.5 सेंटीमीटर. सिमिलरली एमती भी क्वेश्चन पचारि परिबो कि साम या सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन रे वेट फॉर हाइट रो स्टैंडर्ड डेविएशन केते, इट शुड बी लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन टू क्लासिफाई ए बेबी एज सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन. अदरवाइज जदि मॉडरेट एक्यूट मालन्यूट्रिशन कथा कहबा, the range should be between -3 to -2 standard deviation. Next we'll move to next MCQ. Next MCQ hela scurvy is caused by deficiency of dash vitamin. Option A vitamin A, B vitamin B, C vitamin C and D vitamin D. So scurvy is caused by deficiency of which vitamin? The correct answer will be vitamin C. चलंतु किछि एक्सप्लेनेशंस देखिबा, ता पूर्वरु फर्स्ट जानिबा कि विटामिन्स और तार केमिकल नेम्स गुडा को कोन. विटामिन ए, द केमिकल नेम एग्जाम रे पचार दिए डायरेक्टली कि विटामिन के इज अदरवाइज नोन एज व्हाट. सो आई एम गोइंग माने मु पूरा सब एमसीक्यू रा इन डेप्थ और सोर्स पर्यंत जाउची, सो दैट समस्त इजीली बुझी परिबे, प्लस एग्जाम रे पडुथिबा क्वेश्चन डायरेक्टली तो एमसीक्यू पचारिबनी, बट तार रिलेटेड जदि भी एमसीक्यू पचारला देन वी कैन क्रैक इट. So vitamin A is the retinol, and then vitamin D otherwise called as calciferol, and then vitamin E is known as tocopherol, K is called as phylloquinone, and then vitamin B1 is known as thiamine, vitamin B2 is the riboflavin, vitamin B3 is the niacin, vitamin B5 is the pantothenic acid, B6 the pyridoxine, vitamin B7 is known as biotin, vitamin B9 is the folic acid, vitamin B12 cyanocobalamin, and vitamin C is the ascorbic acid. एठु हमको क्वेश्चन पचारथिला कि vitamin C scurvy कौन vitamin deficiency रे हुए, तो आंसर शुड बी vitamin C और ascorbic acid. बट बिफोर दैट हमें समस्त मन रखिबा दरकार कि कौन vitamin और तार केमिकल नेम कौन. सो इच vitamin और तार केमिकल नेम को मन रखिबा दरकार, काहे डायरेक्टली एग्जाम रे क्वेश्चन पचार दिए कि vitamin B6 को अदरवाइज कौन कहंती. So that time we should say it is pyridoxine.
तेणु एग्जाम रे तो डायरेक्टली एमसीक्यू पचारिबनी कि जो एमसीक्यू आम डिस्कशन करूचे एग्जैक्ट मे बी से क्वेश्चन दिस आर द इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बट डायरेक्टली मे बी डिवाइड करके क्वेश्चन पचारि पारे सो इन दैट केस वी शुड एबल टू आंसर इट तो आम आंसर दे परिबा सो मु पूरा कंप्लीटली डिटेल रे जाउची ईच एंड एवरी ऑप्शंस रो यूट्यूब रे तो बहुत सारा वीडियोस मिलिबो जोथिरे डायरेक्ट समान एमसीक्यू डिस्कशन करके चलंती एंड देन देयर आंसर्स आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट सेमती करिबेनी आई नीड योर बेनिफिट्स आई नीड your success. So scurvy is deficiency ame jota discussion करूथिले scurvy is caused by deficiency of dash this vitamin C जदि आपण और भी डिटेल जानिए पय चाहउछंती विटामिन ए बी सी डी वगैरह सो आई हैव डिस्कस्ड इन मेनी क्लासेस बहुत सारा हमर क्लासेस अछि जोथिरे म विटामिन्स मिनरल्स एंड देन प्रोटीन फैट बहुत सारा क्लासेस मु नै छी से क्लास गोडा को भी देखि परिबे सो विटामिन सी is the answer for scurvy I mean the vitamin C deficiency jogu scurvy disease हुए similarly हमें discussion करिबा कौन vitamin जोगु कौन सब disease हुए number 1 vitamin D deficiency disorder number 1 is the rickets and osteomalacia एमती जेमती क्वेश्चन पचारथिला scurvy कौन की vitamin जोगु deficiency जोगु हुए आंसर हैला vitamin C similarly एमती भी क्वेश्चन पचारि परिबो कि rickets कौन vitamin रो deficiency जोगु हुए ता आंसर शुड बी vitamin D या अदरवाइज एमती भी क्वेश्चन पचारिबो जेमती कि ऑस्टियोमालेशिया कौन की विटामिन रो डेफिशिएंसी जोगु हुए द आंसर विल बी विटामिन डी अगेन सो विटामिन डी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर गुड को मन रखिबा भी आवश्यक इज रिकेट्स एंड ऑस्टियोमालेशिया सिमिलरली इफ यू लुक इनटू विटामिन सी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स ताले विटामिन सी डेफिशिएंसी जोगु कौन डिसऑर्डर हुए नंबर 1 इज द स्कर्वी नंबर 2 is the infantile scurvy otherwise known as Barlow's disease very important remember Barlow's disease and number C is the hemorrhagic tendency similarly jodi vitamin A deficiency disorder कहिबा तले आई रे जो डिजीज गुडा को हुए number 1 is the nyctalopia very important is the first and foremost sign of vitamin A deficiency early sign remember this as early sign of vitamin A deficiency is the night blindness or nyctalopia. Number 2 is the xerophthalmia या dry eyes. Next is keratitis. Next is whitehead spot and then keratomalacia. So these are the vitamin A deficiency related eye diseases. Similarly, जदि skin रे देखिबा तो skin रे disease हेबो toad skin or phrynoderma or toad skin. Very important मन रखिबा को पड़िबो कि toad skin कौन vitamin रो deficiency जो हुए. The answer is vitamin A. Similarly, vitamin B deficiency disorders. Vitamin B1 first देखिबा vitamin B1 deficiency disorders are the beriberi again classified as three different categories wet beriberi, dry beriberi and infantile beriberi. Similarly, other disorders related to vitamin B1 deficiency कौन थाए जेमते कि Renix encephalopathy या Renix Korsakoff syndrome and polyneuritis. ए डिसऑर्डर गुडा के विषय रे मो vitamin B1 क्लास रे डिटेल रे कहिछि से क्लास को भी देखि परिबे नेक्स्ट इज vitamin B2 deficiency disorders is the glossitis inflammation of the tongue and then angular stomatitis is the inflammation and then cracking of the angle of the mouth then magenta colored tongue and then cheilosis again the cracked corner of the mouth so these are the vitamin B12 B2 deficiency disorders, glossitis, angular stomatitis, magenta color tongue and cheilosis. Similarly, जदि vitamin B3 deficiency disorder कहिबा, so the important exam रे बारंबार पचारिबो pellagra. Pellagra is due to dash vitamin deficiency. The answer will be vitamin B3, right? So this is pellagra. Pellagra रो पांचटा साइन मन रखिया को पड़िबो exam रे क्वेश्चन पचारि पारे कि which one एमती क्वेश्चन पचारिबो कि ऑप्शन चारटा थिबो ए भितरो फाइंड आउट करो जोटा कि पेलेग्रा रो साइन नुहे सो वी हैव टू रिमेंबर 5 डीज ऑफ पेलेग्रा पांचटा डी मन रखिया पड़िबो फर्स्ट डी इज द डर्माटाइटिस नेक्स्ट डी इज द डायरिया नेक्स्ट डी इज द डेमेंशिया नंबर 4 डी इज द डिप्रेसिव साइकोसिस एंड नंबर 5th डी इज द डेथ इन एडवांस केस देयर विल बी डेथ सो 5 डीज ऑफ पेलेग्रा एमती क्वेश्चन पचारिबो कि पेलेग्रा रो कोन गोटे साइन नुहे सो रिमेंबर डर्माटाइटिस diarrhea, dementia, depressive psychosis and death. Dermatitis, diarrhea, dementia, depressive psychosis and death. These are the 5 Ds of the pellagra.
Next we'll talk about the vitamin B5 deficiency disorder. Disorder gudika hela number 1 nutritional melalgia and then Gopalan's burning food syndrome. This is about vitamin B5 deficiency disorders. Vitamin B6 deficiency disorders are the anemia and peripheral neuritis. Very important, peripheral neuritis. Next is vitamin B9 deficiency disorders or folic acid deficiency disorder is the megaloblastic anemia, homocystinuria, then neural tube defect. NTD. NTD means neural tube defect. Neural tube defect. So exam रे बारंबार exam रे question पचारे कि विटामिन रो डेफिशिएंसी जोगु न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुए जेमति कि स्पाइना बाइफिडा, एनेन्सेफेली, एन्सेफालोसिल एक्सेट्रा. सो ये सब गुड़ाक कि विटामिन डेफिशिएंसी जोगु हुए. The answer will be folic acid or vitamin B9. Next is infertility also will be there. जदि vitamin B9 रो deficiency या folic acid रो deficiency हुए. Most of the time exam रे question पचारिबो कि NTD neural tube defect कि विटामिन रो deficiency जोगु हुए. The answer will be vitamin B9 or folic acid. Similarly megaloblastic anemia दुईटा vitamin deficiency जोगु हुए, vitamin B9 and vitamin B12. That's what you should remember. Next, vitamin B12 deficiency disorder, again the megaloblastic anemia, homocystinuria and infertility. Remember megaloblastic anemia बारंबार एग्जाम रे क्वेश्चन पचारिबो कहार डेफिशिएंसी जोगु हुए. जदि एग्जाम रे क्वेश्चन पचारे और ऑप्शन रे दुईटा जाक थिबो फॉलिक एसिड एंड vitamin B12, देन आंसर vitamin B12 फर्स्ट देबा. देन जदि vitamin B12 नाही देन folic acid आंसर दबा. जदि बोथ अछि then both answer रहिबो folic acid and vitamin B12. Next question हला PCV vaccine is given to protect against dash. PCV vaccine, PCV मान रो full form हला pneumococcal conjugated vaccine. pneumococcal conjugated vaccine. तो PCV vaccine आमे केबे दबा and कौन पाई दबा? Given to protect against dash. कौन disease against रे बा की disease against रे आमे PCV vaccine दोचे. तो answer will be option A typhoid, B diarrhea, C pneumonia, D meningitis. The answer will be pneumonia. Next चलନ୍ତୁ देखि नबा कि vaccine और तार corresponding disease protection से कहागु कराए जेमति कि BCG tuberculosis against रे, then OPV और IPV. OPV और IPV पोलियो अगेंस्ट रे दिया जाए. पेंटावैलेंट भितरे कौन थाए? डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टिटानस, देन हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड हेपाटाइटिस बी रो प्रोटेक्शन पाई. तो रिमेंबर या पेन ट्रिक हला कोन डीपीटी प्लस HIV, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस एंड HEV, hepatitis B virus. So you can remember that way. So DPT plus HIV and HEV. Rotavirus orally दिया जाए against diarrhea. PCV pneumococcal conjugated vaccine is against pneumonia. Typhoid conjugated vaccine is against typhoid. MMR is against mumps, measles and rubella, or otherwise you can say MR vaccine, measles and rubella. Varicella is the chickenpox against a varicella vaccine. Similarly HPV vaccine against cervical cancer जोटा कि दुईटा टाइप रा अवेलेबल इंडिया रे, gardasil and then cervarix. Then JE vaccine against Japanese encephalitis, meningococcal vaccine against meningitis, and TT against tetanus, and then anti-rabies vaccine against rabies. So these are the vaccines against the disease. Now एबे कथा हेबा important anti rabies vaccine विषय रे. Very interesting fact, exam रे पचारिबार चांस बहुत अधिक. मन रखिबा anti rabies vaccine रो dose total based on the days. Day को मन रखिबा first हला 0 day, 3, 7, 14 and 28. मु काहे कि कहूची first हमें day गुडा को मन रखो, then trick मु कहिबी ए day गुडा कर importance कोन और काहे कि हमें day गुडा को मन रखिबा आवश्यक. First 0 डे जदि हमें देखिबा केयरफुली ताले डे गुडा का डबलिंग होची जेमते कि 0 पर 3 तार डबल अप्रोक्सीमेटली 7, देन 7 रो डबल हला 14, देन 14 रो डबल हला 28.
तो इजी मन रखिबार कौन से डिफिकल्टीज नहीं 0 3 7 14 एंड देन 28 डबलिंग होउची डेट गुडा को तो जदि एंटी रेबीज वैक्सीन आमे दउछे ताले तीनटा क्राइटेरिया अछि एंटी रेबीज वैक्सीन देबार कोन क्राइटेरिया नंबर 1 हला पोस्ट एक्सपोजर माने कोन आफ्टर इन्फेक्शन और आफ्टर बाइट दबार माने जदि डॉग बाइट हला कि वाइल्ड एनिमल बाइट हला वाइल्ड एनिमल जदि बाइट करूछि ता परे देन प्री एक्सपोजर माने बाइट हबा पूर्वरु माने जदि वाइल्ड एनिमल बाइट करिबा बा कामुडीबा पूर्वरु जदि आमे वैक्सीन दउछे ताले केते डोज रो दबा देन री एक्सपोजर माने कोन जदि पुनर्बार बाइट करूछि माने गोटे थर आगरु वाइल्ड एनिमल बाइट हेतिला देन सेकंड टाइम नेक्स्ट टाइम आउ थरे बाइट करिछि सो से टाइम रे आमे केते डोज दबा तो एंटी रेबीज वैक्सीन रो तीनोटी डिफरेंट कैटेगरीज अछि कोन पढिले फर्स्ट हला पोस्ट एक्सपोजर बाइट करिबा परे प्री एक्सपोजर बाइट करिबा पूर्वरु री एक्सपोजर माने बाइट करिबारो आउ थरे माने सेकंड टाइम बाइट करिबा परे तो पोस्ट एक्सपोजर पई दुईटा रेजिमेन अछि द फर्स्ट रेजिमेन इज इसेन रेजिमेन एंड नेक्स्ट इज थाई रेजिमेन इसेन रो लेटर जदि हमें कहबा ताले 1 2 3 4 एंड 5 पांचटा लेटर थाई रे 1 2 3 एंड 4 ताले हमें डोज जते बेले दबा इसेन रेजिमेन हिसाब रे 5टा डोज दबा थाई रेजिमेन हिसाब रे 4टा डोज दबा मन रखिबा दरकार एगुडा का ट्रिक इसेन रेजिमेन 5टा डोज पई इसेन लेखा हेनी कि 4टा डोज बोली सेठी थाई लेखा हेनी बट मन रखिबा दरकार कि डोज आमे केते दबा दरकार बोली ट्रिक हला इसेन रेजिमेन रे 5टा लेटर सो आमे मन रखिबार ट्रिक हला एटा कि 5टा लेटर अछि तो आमे मन रखिबार अछि 5टा डोज दबा थाई रेजिमेन रे थाई हिसाब रे 4टा लेटर अछि तो 4टा डोज दबा सो दिस आर द टेक्निक्स हाउ वी कैन रिमेंबर जदि 5टा डोज दबा ताले को डे गुडा करे दबा ताले हम पाखरे तो 5टा डे हम मन रखिया पई कहितले 1 0 3 7 14 and 28 हां 28 so these are the days when we should provide the anti rabies vaccine ARV जदि एंटी रेबीज वैक्सीन दउछे ए डे गुडा करे 5टा डे दबा 0 डे रे दबा देन नेक्स्ट 3 दिन रे दबा गोटे थरो 7th डे रे गोटे दबा 14th डे रे गोटे दबा एंड 28th डे रे आ गोटे वैक्सीन दबा सिमिलरली जदि थाई रेजिमेन हमें फॉलो करिबा ताले 4टा डोज दबा तो मन रखिबार अछि 4टा डोज एंड 4th डे को स्किप करिबा 4th डे माने कोन जोटा 1 यसले 2 3 एंड यसले 4 माने 14th हला 4th डे ताको हमें स्किप करिबा बाकी दिन गुडा कोन हला ताले दबा 0 डे रे दबा 3rd डे रे दबा 7th डे रे दबा एंड 28th डे रे दबा स्किप कले कहा को 4 डोज 4th डे को स्किप करिबा 4 रेजिमेंट्स आई मीन थाई रेजिमेन 4टा लेटर 4टा डोज 4th डे को कोन करिबा स्किप करिबा सो इजी वे मन रखिबार नेक्स्ट हला प्री एक्सपोजर माने बाइट करिबा पूर्वरु जदि हमें वैक्सीनेशन दबा फॉर प्रिवेंशन प्री रे 3टा लेटर अछि 3टा लेटर तेणु 3टा डोज दबा और दबा केमती इंट्राडर्मल माने मन रखिबा दरकार जो 5टा डोज हमें दबा फर्स्ट इसेन रेजिमेन हिसाब रे आईएम दबा थायर रेजिमेन हिसाब रे इंट्राडर्मल दबा सिमिलरली बाकी गुडा करे बोथ दे परिबा आईएम और आईडी यहाँ पे भी मतलब री एक्सपोजर रे भी आईएम और आईडी दे परिबा प्री एक्सपोजर रे 3टा डोज दबा 3टा डोज केमती दबा अल्टरनेटिव डे रे जो हम पढ़िथिले फर्स्ट 0 0 3 7 14 एंड 28 अल्टरनेटिव डे 0 रे स्टार्ट करिबा गोटे डे को स्किप करिकि नेक्स्ट डे देन 7th पर 14 को स्किप करिबा नेक्स्ट 28 रे दबा सो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव डे ठीक अछि 0 देन 3 को स्किप करिकि 7th रे देन 28th रे माने 21 और 28th रे दे परिबा so this is the three doses of the anti rabies vaccine for pre exposure IM ID दुईटा जाको देई हबो then re exposure माने जदी वैक्सीन ऑलरेडी गोटे थरो नेछि देन आउ थरे एक्सपोज हला बा बाइट हला वाइल्ड एनिमल रो किंतु बेसिकली जदी गोटे थरो वैक्सीन नबा परे 3 मास भितरे फॉर एग्जांपल जदी फर्स्ट टाइम वैक्सीन नेछि एंटी रेबीज वैक्सीन एंड विद इन 3 मंथ्स जदी 3 मास भितरे जदी कोनोसी एनिमल बाइट हला देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ नो नीड ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन ठीक अछि डोज नबारो
डोज नबार 3 मास भितर विदिन 3 मंथ्स जदि कौन है कौन सी एनिमल बाइट है वाइल्ड एनिमल बाइट देन देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग नो नीड ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन किंतु डोज नहीं थिला देन 3 मास परे जदि कौन सी वाइल्ड एनिमल बाइट होची देन हमें दुईटा डोज दबा 2 डोजेस केमती दबा केवल फर्स्ट दुईटा दिन फर्स्ट 0 डे and then third day that's it so this is very simple and very interesting fascinating facts about anti rabies vaccine विषय रे बहुत interesting fact one post exposure pre exposure and re exposure post pre and re post रे दुईटा 5 4 3 2 that's it पांचटा ईसन रेजिमेंट पांचटा डे रे दबा 0 3 7 14 and 28 IM that's it ईसन रेजिमेंट फोर्थ थाई रेजिमेंट हिसाब रे चारटा डोज फोर्थ डे को स्किप करबा आईडी दबा बाकी डे गुडा करे दबा दैट्स इट देन प्री एक्सपोजर तीनटा डोज केमती दबा अल्टरनेटिव डे 0 1 7 and 28 दैट्स इट नेक्स्ट री एक्सपोजर दुईटा डे केवल फर्स्ट दुईटा दिन 0 और थर्ड डे नेक्स्ट एमसीक्यू ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन इंट्रामस्कुलरली एक्सेप्ट ए भितरु कोन वैक्सीन अछि जहा को हमें इंट्रामस्कुलरली दबा नाही क्वेश्चन पचारि छि एक्सेप्ट so options are option A DPT vaccine B hepatitis B vaccine C pentavalent D MR vaccine ठीक अछि तो DPT vaccine मु ट्रिक किछि कहबी केमती मन रखिबा दरकार नंबर 1 इज द फेम मन रखिबा समस्ते नंबर 1 इज द फेम माने कोन P stands for pentavalent and then H stands for hepatitis B right M माने कोन इंट्रामस्कुलर मन रखिबा पेंटावैलेंट रे कोन कोन अछि एबे कहितली मु डीपीटी डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटानस देन एचआईवी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस एंड देन हेपाटाइटिस बी ये सब गुडा को आमे केमती दबा आईएम दबा तो आंसर कोन हे गेला फर्स्ट डीपीटी वैक्सीन को आईएम दे परिबा राइट हेपाटाइटिस बी को भी देई हबो एंड देन पेंटावैलेंट को भी देई हबो सो फेम दैट्स इट गोटाई ट्रिक मन रही जिवो कि आईएम आमे दबा कहि कि काहा को पेंटावैलेंट हेपाटाइटिस बी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा पेंटावैलेंट भीतर तो डीपीटी आसुची हेपाटाइटिस बी आसुची दैट्स इट सो आमे कहि परिबा कि इंट्रामस्कुलरली ये तीनटा को आमे दबा कहि के सो फर्स्ट हैला फेम नेक्स्ट निमोनिक इज द बीड माने कोन फर्स्ट बी माने बीसीजी आई माने कोन आईपीवी एंड डी माने आईडी माने अगेन इंट्राडर्मल आ गोटे ट्रिक हैला फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू शुड रिमेंबर लेफ्ट टू राइट केबे केबे एमती भी क्वेश्चन पचारे कि बीसीजी वैक्सीन रो साइट कोन तमे कोन कहबा लेफ्ट अपर आर्म जदि आईपीवी पचारिबो देन वी शुड से राइट अपर आर्म राइट सो वी कैन से दैट वे कि बीड को हमें कहि परिबा बीसीजी और आईपीवी देन बीसीजी को हमें दबा कोठी लेफ्ट अपर आर्म रे एंड आईपीवी को दबा राइट अपर आर्म सो लेफ्ट टू राइट बीड नेक्स्ट ट्रिक हला जेम्स J means Japanese encephalitis and M means measles ठीक अछि एटा हला जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन एंड मीजल्स वैक्सीन एस माने सबक्यूटेनियस एससी सबक्यूटेनियस राइट सो एठी आंसर हला एमआर माने कोन मीजल्स एंड रुबेला तो आंसर कोन रहिबो कि मीजल्स को हमें केमति दबा सबक्यूटेनियस दबा दैट्स इट तो आंसर अगेन जेम्स रो मन रखिबा दरकार जदि मीजल्स वैक्सीन एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस हमें दोछे अगेन इट विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट माने लेफ्ट अपर आर्म फर्स्ट दबा लेफ्ट अपर आर्म रे कहा को जापानीज एनसेफेलाइटिस को मीजल्स को राइट अपर आर्म रे दैट्स इट सो वी शुड रिमेंबर ओनली 3 डिफरेंट निमोनिक्स तीनटा निमोनिक मन रखिबा एंड इट विल से एवरीथिंग अबाउट द रूट्स ऑफ और साइट्स ऑफ द वैक्सीनेशन so number 1 is the fem next is the bead and number 3rd is the gems that's it so fem is the pentavalent IM daba bead BCG au IPV intradermal daba from left to right and gems re Japanese encephalite and measles subcutaneous
लेफ्ट टू राइट. The answer will be, it answer कौन है कोटा में सब इंट्रामस्कुलर दबानी is option D is the MR. Next MCQ, the minimum legal age limit for employment of children is dash. Option A 10 years, B 12 years, C 14 years, D 16 years. The correct answer will be 14 years. The explanation cell according to Article 23 India ro Article 23 Constitution, Indian Constitution Article 23 हिसाब रे any type of forced labor, let me change my color, pen color. Article 23 रो Indian Constitution Article 23 हिसाब रे any type of forced labor कहा को मैं forcefully काम करिया पई नहीं परिबा नहीं, it's completely prohibited. Article 24 next Article 24 रे कहा गला कि चाइल्ड अंडर 14 years cannot be employed. जदि कौन सी छुआ 14 वर्ष रु कम तले तको एम्प्लॉयमेंट दबा उचित नुहे टू परफॉर्म एनी हजार्डियस वर्क. तो हजार्डियस वर्क किंबा एम्प्लॉयमेंट दबा उचित नुहे. चाइल्ड लेबर एक्ट एग्जाम रे क्वेश्चन पचारिबो कि चाइल्ड लेबर एक्ट केबे केबे लॉन्च करा हेतिला. द आंसर विल बी 1986. Child Labor Act 1986 हिसाब रे prohibits children under 14 age of 14 years to be worked in hazardous industries or processes. आमे कोनोसी छुआ को 14 वर्ष रु कम जदि छुआ हेथिबो ताले ताकू काम रे लगै परिबा नाही. So these are the legal laws of Indian Constitution. So this is the answer कि 14 वर्ष रो छुआ जदि माने लीगल एज लिमिट हैला 14 वर्ष ता परे हेले आमे काम रे लगै परिबा छुआ को. But the child labor is should be prohibited. We should allow छोटे छुआ मान को allow करिबा दरकार पढ़िबा पई काम पई नुहे. So next question is what is antara? Antara कोन? Option A an injectable contraceptive pill, B progesterone only pill, C combined oral contraceptive pill, D none of these. The answer will be an injectable contraceptive. So let's see antara kono. Antara hela kono ki it contains the chemical called medroxyprogesterone. Medroxyprogesterone माने progesterone hormone या भितर अछि. Injection for 150 milligram per ml 150 milligram and it is injectable contraceptive injection, right? So this is antara injectable contraceptive contraceptive. Next is dengue caused by the bite. Dengue caused by the bite of dash. Option A Culex mosquito, B Aedes aegypti mosquito, C female Anopheles mosquito, D Mcqs. The answer will be dengue caused by dash. Option B is the correct answer, Aedes aegypti mosquito. तो मन रखिबा तीनटा डिफरेंट टाइप रो मस्किटो जोटा कि इंडिया रे डोमिनेंटली देखा जानती. कौन कौन गोटे है क्यूलेक्स मस्किटो, नेक्स्ट इज एडिस, नेक्स्ट इज एनोफिलिस. सो क्यूलेक्स रिलेटेड डिजीज है जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड देन लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एंड वेस्ट नाइल फीवर. एग्जाम रे क्वेश्चन पचारिबो डायरेक्ट कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस रो वेक्टर किए. द आंसर विल बी क्यूलेस मस्किटो, राइट. नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि पारे जेमति कि एठी पचारला कि डेंगू कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ व्हाट मस्किटो. द आंसर इज एडिस मस्किटो. एडिस मस्किटो द्वारा कौन कौन हे पारे डिसीजेस. नंबर 1 इज द चिकनगुनिया, डेंगू और रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर, जिका एंड लिम्फेटिक फाइलेरियासिस. Then next is anopheles. Anopheles related what you can say disease are the malaria and lymphatic filariasis. Basically female anopheles कराए कौन malaria कराए. जब हम देखिबा ताले lymphatic filariasis is common. Lymphatic filariasis Culex द्वारा भी होउची, Aedes द्वारा भी and anopheles द्वारा भी. But you should remember कि इंडिया रे बेसिकली तीनटा जाक तो करंती. जदि तीनटा जाक आंसर अछि गोटे आंसर हमको चूज करिवार हबो ताले आंसर शुड बी Culex fatigans. Fatigans is the correct answer. Culex fatigans is the correct answer for this. जदि तीनटा जाक अछि हम गोटे आंसर चूज करिवार हबो ताले Culex fatigans is the most common mosquito which is responsible for dengue. Dengue पाई
Qlex I mean sorry lymphatic filariasis ପାଇଁ responsible. Lymphatic filariasis ପାଇଁ Qlex pathogens is the correct answer, but India रे तीनटा जाक करै परंती lymphatic filariasis, Qlex B, Aedes B, Anopheles B. जदि but गोटाई हमको आंसर चूज करिबार हबो then answer should be Qlex pathogens. Next MCQ, fever followed by maculopapular rashes and any of cough, coryza and conjunctivitis. जदि फीवर होउची कहा परे मैक्युलोपापुलर फीवर देन फीवर परे कोन होउची मैक्युलोपापुलर रैशेस होउची कफ होउची कोरिजा होउची कंजक्टिवाइटिस होउची देन दिस डिनोट्स व्हिच डिजीज ये कौन डिजीज को रिप्रेजेंट करूची ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स बी मीजल्स सी टिटानस डी चिकन पॉक्स द करेक्ट आंसर विल बी मीजल्स नाउ तो आंसर जानिया पूर्व आम जाना दरकार कि स्मॉल पॉक्स मीजल्स टिटानस और चिकन पॉक्स रे कौन कौन हुए देन वी कैन करेक्टली आंसर दिस नंबर 1 विल टॉक अबाउट स्मॉल पॉक्स फर्स्ट स्मॉल पॉक्स रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स जोटा कि एग्जाम रे क्वेश्चन पचारिबो नंबर 1 24 May 1975 लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज डिटेक्टेड इन इंडिया रे लास्ट केस जोटा डिटेक्ट हेतिला स्मॉल पॉक्स रो दैट इज 24 May 1975 India was declared smallpox free country. Smallpox free country जब India declare हला, the answer is केबे declare हला? Answer will be 5th July 1975. Similarly, India was declared smallpox eradicated country. Answer will be 1977. Then smallpox eradicated globally. Total world ro smallpox केबे eradicate हला? Answer will be May 7th 1980. Causative agent. What is the causative agent of smallpox? Answer will be variola virus. Similarly, another question may be like what is the incubation period of smallpox? Answer should be 12 to 14 days. Now let's talk about some other facts about smallpox. Smallpox विषय आउ किसी facts. Clinical feature: acute fever हबो and fever will be more than 38.3 degrees centigrade. And basically इथरे को type रो rashes देखा जाए मैक्युलोपापुलर रैश एंड बेसिकली आमे सेंटर कंसीडर करूछे फेस रु स्टार्ट हबो जीव कुआडे ट्रंक एंड देन लोअर लिम्स फर्स्ट स्टार्ट्स इन केस ऑफ स्मॉलपॉक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द फेस एंड देन गोज टू ट्रंक एंड देन टू द लोअर लिम्ब दिस वे द सेंटर इज द फेस रिमेंबर दिस सेंटर इज द फेस एंड सेंटर रु आउटवर्ड जाउछे दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रीफ्यूगल जदि कोनोसी जिंस सेंटर रो बाहर आड़ को एमती जाउची दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल जदि सेंटर आड़ को आसुची दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल एंड जदि सेंटर आड़ को आसुची जेमति कि फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर एंड सेंटर आड़ को आसीबो ए टाइप रो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल जेमति कि फॉर एग्जांपल बाहर स्टार्ट हबो फेस आड़ को जीवो बाहर स्टार्ट हबो फेस आड़ को जीवो कॉल्ड सेंट्रीपेटल एंड जदि फेस रु स्टार्ट हे के बाहर आड़ को आसीबो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम रे क्वेश्चन कोन पचारिबो कि इन व्हिच डिजीज देयर विल बी सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैशेस द आंसर विल बी स्मॉलपॉक्स राइट एंड एमिति भी पचारि परिबो क्वेश्चन कि डिजीज रे रैशेस गुडा का फेस रु स्टार्ट होई ट्रंक एंड लोअर लिम्ब बड को जाए दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम रे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एटा पचारिबो कि इन व्हिच डिजीज देयर विल बी centrifugal distribution the answer will be centrifugal distribution of the rhesus answer will be smallpox next will be next first देखा जीवो smallpox रे जदि हमें देखिबा first देखा जीवो macules then will become papule then vesicles हबो then pustules and then scabs जोटा कि dry हबा पर scabs आसे then in case of smallpox there will be no pleomorphism all lesions are at the same stage very important exam रे क्वेश्चन पचारला भलिया कि क्योंथिरे प्लियोमॉर्फिज्म देखा जाए नहीं चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स द आंसर विल बी स्मॉल पॉक्स सो व्हाट इज प्लियोमॉर्फिज्म बुझिबा पई फर्स्ट हमें प्रीवियस पिक्चर को जिबा जोटी देखिबा सब रैशेस गुडा को मैक्युलोपापुलर रैश आर इन ए सिमिलर स्टेज एमती लागुनी कि गोटे छोट आ गोटे बहुत बड़ एडवांस स्टेज रे अछि सेमती भी नुहे सब गुडा को लागुछि जेमती इक्वली स्टार्ट हेथिले आ इक्वल स्टेज रे अछंती कि गोटे छोट किबा बड़
किंबा गोटे स्टार्ट होउची आ गोटे पूरा डेवलप हेकी फाटिबा अवस्था को आसिलानी बा एडवांस स्टेज हेलानी सेमती नुहे सो ऑल आर इन इक्वल स्टेज प्लियोमॉर्फिज्म माने कोन मॉर्फिज्म माने स्ट्रक्चर मॉर्फिज्म मीन्स स्ट्रक्चर एंड प्लियो माने कोन प्लियो मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर एठी नाही देयर इज नो प्लियोमॉर्फिज्म डिफरेंट स्ट्रक्चर नथिले कहबा प्लियोमॉर्फिज्म राइट डिफरेंट स्ट्रक्चर थिले कहबा प्लियोमॉर्फिज्म एंड नो प्लियोमॉर्फिज्म माने डिफरेंट स्ट्रक्चर नाही different features nahi that's it so no pleomorphism now you can see this centrifugal force jota ki center ru bahar ad ko asuchi mane let's say it is the face to outward and then jodi outward ru face adu ko asibo kahiba the centripetal but basically it ame face ku center dharche boli otherwise centrifugal force mane as general ame kahi pariba center ru bahar ad ko jodi center ad ko jauchi kahiba centripetal force. Next now see the difference between smallpox and chickenpox RAS. Smallpox रे हमें देखि परिबा so all RASes are in equal stage but in chickenpox हमें देखिबा गोटा छोटो start होउची आ गोटा already advanced stage रे अछि so this is called pleomorphism माने एटी different stage रे हमें सब RASes गुडा को देखिबा but in case of smallpox will get all the RASes will be in equal stage or same stage there is same stage रे थिबे so that's why called no pleomorphism right pleo माने बुझी गले different morphism माने structure या feature so different features nahi so this is called no pleomorphism and pleomorphism in case of chickenpox means they are in different stages. Now this is how the real chickenpox will be looking like they are in different stages as you can see right so that's why these are called pleomorphic stages. Positive agent chickenpox is the HHV virus or human herpes virus that is basically the varicella zoster virus VZ virus you can say VZ virus varicella zoster virus. Incubation period is the 14 to 16 days smallpox I am padithile 12 to 14 days and now in chickenpox it is 14 to 16 days once the crossed forms the patient becomes a non-infectious. Question pacharibo ki chickenpox re kebe patient non-infectious way answer will be when there will be crossed formation. The clinical feature chickenpox re kon rahibo first pre-eruptive stage re kon rahibo fever with body ache eruptive stage re rahibo symmetrical vesicular rash then spread kemti hobo spread will be from trunk to upper body and then to the face and arms but palms very important palms and soles are not affected जदि एग्जाम रे क्वेश्चन पचारे कि चिकन पॉक्स रे बॉडी रो कोन क्यों पार्ट अफेक्ट हुए नहीं द आंसर विल बी palm and soles right next this is the centripetal distribution क्यों डिजीज रे centripetal distribution way the rashes ro the answer will be chicken pox right next is rashes are pleomorphic in nature no pleomorphic in chicken I mean smallpox pleomorphic माने different stage रे थिबा rashes गुडा को answer will be chicken pox. Now exam रे question पचारिबो the great pox कहा को कुहा जाय the answer will be syphilis which is caused by treponema pallidum द्वारा syphilis हुए and otherwise हमें कहि परिबा great pox chicken pox small pox and great pox. Both variola and VZ virus are DNA virus. Another question variola virus and VZ virus both are DNA virus. Now let's talk about the measles now. Measles विषय कथा हेबा. So now these are not basically the papules but these are the rashes we can say simple rashes. So agent हेबो RNA paramoxovirus. Now this is the RNA virus as you can see chickenpox smallpox these are the DNA viruses and then measles रे RNA paramoxovirus. Incubation period again 10 to 14 days. पढ़िले smallpox I mean exactly the smallpox रे कोन अछि 12 to 14 days and then पढ़िले chickenpox रे 14 to 16 days incubation period and measles रे अछि 10 to 14 days. So these are the incubation period of different smallpox chickenpox and the measles. The mode of transmission basically airborne and droplet infection.
most common age जेतेबेले measles हुए, the answer will be 6 months to 3 years. Measles को otherwise हमें कहि परिबा also known as rubeola. Rubeola is otherwise called as measles otherwise called as rubeola. Clinical feature, there are different stages होछि, prodromal stage and eruptive stage. Prodromal stage रे कोन कोन हबो, exam रे एमती भी क्वेश्चन पचारिबो कि prodromal stage and eruptive stage की disease रे देखा जाए, क्यों disease रे prodromal stage और eruptive stage थाए. The answer will be measles or rubeola. The prodromal stage रे कोन कोन features रहिबो, fever, malaise, then coryza, and then Koplik spots. Very, 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 very important. The classical feature of measles is the Koplik spot, right? Most of the time exam रे image based question पचारिबो Koplik spot रो, जोटा कि basically the clinical sign of the measles. Next, eruptive stage रे कोन हबो, rashes देखा जिवो ear पछपटे, face रे, and then body को distribute हबो. Very important. Remember fever, malaise, and coryza. Next, we'll talk about the rash is due to the T cell which are infected with the virus. Basically, rashes देखा जबर reason है T cell infected होचे virus द्वारा, and that's why the measles disease हुए. Post measles stage तो आमे पढ़िले एबे दुईटा स्टेज, गोटे हला प्रोड्रोमल स्टेज, इरुप्टिव स्टेज, नेक्स्ट स्टेज हला पोस्ट मीजल स्टेज जोथरे वीकनेस और डायरिया रहिबो. देन 3 C's इन measles. इठु हमको क्वेश्चन पचारिथिला cough, coryza and conjunctivitis. Cough, coryza and conjunctivitis are the very common, and then 3 C's of measles. You should remember this to answer the MCQs. MCQ answer दबा पई हेले एटा को तो मन रखियो पड़िबो. Cough, coryza and conjunctivitis MCQ देखिबा. सेठी क्वेश्चन पचारिथिला fever followed by fever हबो, fever केबे हबो, the prodromal stage रे हबो, then maculopapular rashes आसीबो, and any of the cough or coryza or conjunctivitis thibo. The answer will be the measles. Direct answer, right? So 3 C's of the measles are the cough, coryza and conjunctivitis. These are the 3 C's of the measles. So answer दबा पई सेटा तो जानिबा निहाती आवश्यक कि measles रो 3 C's कोन, otherwise answer दबा difficult रहिबो. So एमती क्वेश्चंस गुडा को सॉल्व करके नउछि जोटि कि कोनोसी भी क्वेश्चन पचारे आंसर दबा इजी रहिबो. एमती नुहे कि एमसीक्यू सॉल्व करके जाउछे और एमसीक्यू डायरेक्ट पचारिबो, सेमती तो हुए नहीं. बहुत सारा सेमती यूट्यूब रे वीडियोस मिलिबो, यू कैन वॉच दैट, बट विल नॉट गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट. Next, we'll talk about the most common complication. So, next we'll talk about the most common complication of the measles will be the otitis media, and then the most common cause of death is the pneumonia. Exam re question pacharibo, what is the most common complication of the measles? Answer will be otitis media. And what is the most common cause of death in measles? Will be the pneumonia. This is what the Koplik spot will be looking like. Inside the mouth भितरे ए टाइप रा हमको सब व्हाइट कलर पर्ल वाली पैचेस सब देखा जिवो. These are called Koplik spot, and these are the basic important signs of the measles.